everyone. Today in Natural Resources chapter we are going to discuss the topic water cycle. So children, in our previous video I have explained you biogeochemical cycles. So what are biogeochemical cycles? Biogeochemical cycles are the cyclic pathways through which chemical elements they move from environment to organisms and back to the environment. These are biogeochemical cycles. And you know, water cycle, it is also the part of biogeochemical cycles. So what is water cycle? The whole process in which water evaporates and it falls on the land as rain and snow, and later it flows into the seas through rivers. So this is water cycle. But you know, this process is not so simple. ये जो process है ये केवल एक step में नहीं होती है. So how it happens? Let's study. Children, see, earlier I told you that how clouds are formed. So during daytime, due to solar radiations, water bodies they get heated and water it is evaporated. Okay, from these water bodies. जब दिन में solar radiations की वजह से जो water bodies है they get heated, तो ये जो water है surface water which is present in river, seas or lakes or in oceans, तो ये water evaporate होता है. Okay, and due to condensation clouds are formed. क्योंकि ये जो water air also it gets heated, so the air which rises up it carries water vapors with it, and when these water vapors they cools down they get condensed, okay, and they form tiny droplets of water. और फिर उसके बाद क्या होता है? Clouds are formed, and when these water droplets they get heavier they falls on the land as precipitation. Rain है, snow, sleet, hails, these all are the form of precipitation. Okay, so water it gets evaporated, and when clouds are formed, when they get heavier, again it falls on the land. And you know, water from biological activities like transpiration and respiration. Transpiration, what is transpiration? Transpiration is the process in which water gets evaporated. Okay, in water जो है, water जो plants हैं they carry out this process. Okay, so water it gets evaporated in the form of water vapor. तो ये transpiration, this is also it is a biological process. And respiration की वजह से भी environment में water vapors present होती हैं. Okay, water vapors आती हैं. तो these water vapors they get also evaporated. Okay, and they also contribute in the formation of clouds. Children, you know, water that falls on the land, it does not flows into the seas immediately. Means some of the water it seeps underground and it becomes the part of this fresh water. Okay, जो बारिश होती है और ये precipitation के through जो water अर्थ में आता है, it falls on the land in the form of rain or snow or sleet. So this water means some part of this water it seeps down. Okay, ये risk करके underground water का part बन जाता है. And sometimes what happens, this fresh underground water it comes out on the surface, earth surface in the form of springs. और ये जो है fresh water springs जो है उनके through भी जो water है, this water comes out on the earth surface. And sometimes we use this water from wells or from tube wells. Okay, so this rain when it falls on the ground, कुछ part इस rain का, इस water का it gets seeps down और ये इस underground water का part बच जाता है. And children, water, which is a very important natural resource and is also used by terrestrial animals and plants for various life processes. Children, as we all know that water is capable of dissolving a large number of substances, and that is why water is called यूनिवर्सल सॉल्वेंट. देखिए, आपने गौर किया होगा पानी में बहुत ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो डिज़ोल्व हो सकते हैं. मीन्स अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी डिज़ोल्व इन वाटर, और इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है. एंड व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू और ओवर रॉक्स कंटेनिंग सॉल्युबल मिनरल्स, सम ऑफ देम गेट डिज़ोल्व्ड इन द वाटर. और देखिए, जब पानी रॉक्स में से फ्लो करता है तो जो सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं. And thus rivers they carry many nutrients from the land to the sea, and these are used by the marine organisms. और देखिए, जो dissolved nutrients हैं पानी में वो रिवर वाटर के थ्रू, रिवर्स के थ्रू लैंड से सी में आ जाते हैं वो सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, और
सी में ये मरीन ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं. So children, we have completed water cycle, the process in which water evaporates and falls on the land as rain and later flows back into the sea through rivers. It is water cycle. Now children, next topic is oxygen cycle. Oxygen, which is one of the constituent of water and forms about 21% of the air in the atmosphere. And you know children, oxygen, it also occurs in the combined form in the earth crust as well as also in the air in the form of कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए जो अर्थ क्रस्ट है उसमें ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है और ऑक्सीजन एयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में भी मिलता है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड इन क्रस्ट it is found as the oxides of most metals and silicon and also in the form of carbonates, sulfates, nitrates and other minerals. देखिए सल्फेट्स जैसे SO4, nitrates, NO3, NO2, sulfur dioxide. So it occurs in the combined state in earth crust as well as in the air. And you know children, oxygen, it is a very essential component of most of the biological molecules like carbohydrates, proteins, fats, lipids और न्यूक्लिक एसिड्स. जैसे आप ग्लूकोज को देखिए, ग्लूकोज C6H12O6, तो उसमें ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. तो ऐसे ही ये प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड्स जैसे DNA, RNA और फैट्स का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है. So oxygen cycle, it refers to the cycle that maintains the level of oxygen in the atmosphere. तो ऑक्सीजन साइकिल जो है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन का लेवल एटमॉस्फेयर में मेंटेन रखती है. And children, oxygen which is present in the atmosphere in free state, this oxygen is used in 3 processes. What are these 3 processes? Combustion, respiration and in the formation of oxides of nitrogen. So first of all I will tell you about combustion. Combustion यानी किसी भी फ्यूल का जलना, कोई भी चीज़ अगर जलती है तो उसे हम बोलते हैं combustion. And it requires oxygen because oxygen it supports burning. बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ जल नहीं सकती है. And second process is respiration. Respiration it also requires oxygen. So what is respiration? Respiration is a process in which food is broken down in carbon dioxide, water and energy. जो ग्लूकोज है उससे एनर्जी जो डिराइव होती है वो रेस्पिरेशन के थ्रू होती है एंड रेस्पिरेशन के लिए भी ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है. एंड थर्ड प्रोसेस इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, आई विल टेल यू फर्दर इन दिस चैप्टर इन नाइट्रोजन साइकिल. दिस प्रोसेस ऑल्सो रिक्वायर्स ऑक्सीजन. सी चिल्ड्रन, एनिमल्स दे कंज्यूम ऑक्सीजन क्योंकि एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है. बट ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इन ओनली वन मेजर प्रोसेस विच इज photosynthesis. Photosynthesis is the process in which plants consume carbon dioxide from the atmosphere and in return they give oxygen. See children, green plants are the only organism that consumes this carbon dioxide and in return they give oxygen to the atmosphere. केवल ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे क्रीचर्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके ऑक्सीजन देते हैं और इस तरह से ऑक्सीजन का परसेंट एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहता है बिकॉज एनिमल्स दे कंज्यूम ऑक्सीजन एंड प्लांट्स दे गिव ऑक्सीजन एंड दे कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड. सो चिल्ड्रन, वी हैव completed oxygen cycle.